So I think we are done with this third four points, right? This is the another point that is there. Buying an off-sell company. What does it mean? कि आप ऐसी company buy कर लो who is already मतलब that do not need to make up the company that is already existing. You're buying an existing company, okay? Off the self company means existing company, okay? That is there already, yeah? From years, okay? You're buying it. So it is ready to contact without waiting for the incorporation. Okay? I'm clear? Yes, sir. Yes, sir. The case study that we're looking into is that the fact ABC enter into the contact with the claimant. Claimant कौन होता है? The one who is claiming, huh? Defendant, huh? ABC enter into the contact. So who they are? They are basically probably the promoters, right? But we will see what they're talking about. ABC entered into the contact with the claimant to purchase good on the behalf of the proposed Gravesend Royal Alexandra Hotel Company. तो इसके behalf पे उन्होंने purchase करना है goods, तो वो claimant के साथ contact में गए. Claimant क्या so probably these are the partners. Claimant का वो होगा जो goods service provide करा रहा होगा. Okay, the goods were supplied and used in the business, right? Shortly after the incorporation, the company collapsed. If the company has been collapsed, so क्या हुआ हुआ जो claimant होगा उसने goods जो provide किए होंगे, he will not be getting the money. What I'm thinking, so है ना? He might not have got the money out of it. So hell reason was that his grave Vincent Royal Alexander Hotel Company was not in existence when the contract was made. It was not bound by the contract and could not be sued for the price of the good. Neither it could be rectify the contract after the incorporation. वो rectify भी नहीं कर सकते. Rectification कब कर सकते हैं? जब वो नोवेशन एग्रीमेंट बनाए. ठीक है? ठीक है? Yes, हेलो. sir. नोवेशन एग्रीमेंट बनाएंगे जब आप, तो वी हैव अ चांस टू डू व्हाट? रेक्टिफिकेशन. ठीक है? ना तो आपने नोवेशन बनाया, ना आपने कंपनी का नाम रखा, तो हाउ इट कुड बी? तो हु आर गोइंग टू पर्सनली लायबल इन दिस केस? हु गोइंग टू बी पर्सनली लायबल इन दिस केस? कम अगेन. कम. यस. हु इज गोइंग टू बी पर्सनली लायबल इन दिस केस? The promoters. एग्जैक्टली. ठीक है? एंड हु दे आर इन दिस केस? ABC. डन. अब क्लियर ऑन Yes, दैट? sir. An off-sell company is one that has already been formed. Of buying an off-sell company is a number of the advantages follow. It could be that कि आपको एग्जाम में पूछ लिया है कि off-sell company buy करे तो what are the, तो it is in cheap and simple, right? So why it is taking a time? आप off-sell company खरीद रहे हो तो आप you're paying for the customer, you're paying for the ongoing operation ना. आपको इनिशियल 2 3 5 years नहीं देनी पड़ेंगी कंपनी को फॉर्म करने में, बिल्डअप करने में. ठीक है? जो ओवरऑल इट विल बी अ चीप एंड सिंपल प्रोसेस. कैन ट्रेड इमीडिएटली क्योंकि कंपनी फॉर्म्ड है. नो प्रॉब्लम ऑफ द pre-incorporation of the contract. Okay, done. Now, what is registration? When you getting yourself your company registered, जब आप initial company को register करा रहे हो तो कौन कौन सी चीज आपको देनी पड़ेगी? What are the documentation required? The following must be submitted to the register in order to form a company. What are those? The memorandum of the association, that is an MOA. Okay. What are these things? We will be learning later on. But these are the founding document. These are the initial document, without which the company cannot be formed. Okay. Memorandum of association should be there, and it should be signed by all the subscriber, means the initial shareholder or founding member. ठीक है? And stating that they wish to form a company and agree to become the member of the company. Okay. So subscriber basically these are the initial few people. Member, who are the member? What I'm talking about, the member means they are the shareholder of the company. So shareholder and the member can be exchanged interchangeably. It could possible that who is in shareholder can become the member of the company, but it is not always right that a member will always become the shareholder of the company. Okay, so remember these things. Okay, subscriber will be used when you are talking about the initial shareholders. Okay, the one who are just there as in founding members. It is not possible to amend or update or change the MOP. अब जो memorandum of association है ना, वो एक constitution documentation है. ठीक है? One of the like constitutional documentation, and that cannot be changed very frequently. Yeah, so it is not possible to amend, update or change the MOE. ठीक है? Is it okay? Yes, sir. Hello.
अभी if we talk about the application for registration, what does it mean? The following information must be given to the register in an application form for registration. Propose company name, if the member will have the limited liability, अगर कोई member है who will be having limited liability तो आपको बताना पड़ेगा. It is a private and public company. Detail of the registered office. Okay. At third, we have to send the statement of the capital initial shareholding. That will So consist कि limited आपके limited liability. Limited हाँ liability means the promoters or the shareholders will pay the liability themselves, right? अभी देखो तो जो मेंबर्स है ना, मेंबर्स में प्रमोटर्स नहीं आएंगे, ठीक है. प्रमोटर्स अगर आएंगे तो उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी कब होगी, अगर वो प्री इनकॉर्पोरेशन बना रहे. तो समविथ व्हाट आई एम Okay. ऑब्जर्विंग कि आपको ना हर हर चीज को टॉपिक वाइज देखना पड़ेगा, ठीक है. अभी जो हमारा टॉपिक हो रहा है ना वो रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हो रहा है. तो हो सकता है कि जो Okay. प्रमोटर्स हैं दे माइट बिकम द मेंबर, इट कुड पॉसिबल, राइट. They can be called as in the Okay. broad member of the company, yeah, because they are working as a promoter. But promoterly, mostly 80-90% they will be called as a promoter, not the member. Okay, first thing. अब जो प्रमोटर्स हैं Okay. उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड कब होती है, अगर वो कोई प्री इनकॉर्पोरेशन ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, और जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो भी बना रहे हैं उसमें अगर वो ऐसी कुछ मिस्टेक करते हैं, तो उस हिसाब से उनकी क्या, उनकी मिस्टेक कौन सी करते हैं, अगर वो डिस्क्लोज नहीं करते, अपनी फिड्यूशियरी ड्यूटी को पूरी नहीं करते, इन दैट केस दे विल बी पर्सनली लायबल, ठीक है. अदरवाइज दे विल नॉट बी, है ना. अदरवाइज दे विल नॉट बी, Okay, sir. ठीक है. हाँ, सो दिस इज द मेन थिंग. दीज आर द मेन थिंग. अभी क्या है, जो मेंबर्स व्हाट आई मीन टू कि जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स है ना उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. शेयर होल्डर Okay, की sir. कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो ये चीज आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं. फर्स्ट पेपर है, इट विल कम व्हेन यू विल बी अपेयरिंग मल्टीपल ऑफ द पेपर ऑफ द ईसीसी, ठीक है. Okay, sir. स्टेटमेंट ऑफ द कैपिटल इनिशियल शेयर होल्डिंग. इट इज essentially is a snapshot of the company's share capital at a point of registration. It must mention what it does must mention that total number of the share to be taken by the subscriber, कि कितने जो सब्सक्राइबर्स है उनसे कितना टोटल नंबर ऑफ शेयर लिया जा रहा है. Aggregated nominal value of the share taken by the subscriber, the classes of share and the right which they are entitled. What does mean कि जो शेयर होते हैं ना, like they are an ordinary share है ना, they are like preference shares, right? You have done your 12th from commerce, right? Yes, sir. हम्म. तो जो प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स हो गए उनके अंदर जो भी राइट आते हैं ना उन शेयर के साथ, वो एन एग्रीगेटेड अमाउंट अनपेड टू द टोटल नंबर ऑफ द शेयर्स, एड्रेस ऑफ द सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर्स, राइट, इनिशियल शेयर होल्डर्स. Fourth thing that is going to be there to registration is that statement of the guarantee. What does it mean? It is necessary, only applicable. It is state the maximum amount each member agree to contribute. Okay. जो हमारा एक स्टेटमेंट बाय जो एक कंपनी होती है ना, दैट इज इन प्राइवेट कंपनी बाय द गारंटी, तो उसमें यही होता है कि हर एक इंडिविजुअल उतना ही अनलिमिटेड लाइबल रहेगा जितना वो गारंटेड किया है, ठीक है. If we talk about the statement of the consent to act, what does it mean? The company for confirmation that the director or the secretary has given their consent to dispose their duties. Okay, the statement of consent to act, एक ऐसा स्टेटमेंट देना जो अपना कंसेंट दिखा रहा है टू एक्ट. ओके, हेलो, ठीक है. व्हाट डज इट मीन कि कंसेंट मीन मेरा कंसेंट क्या होगा कि मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ नहीं कर रहा, ठीक है. तो एक ऐसा स्टेटमेंट whenever you learn about the statement, what does it mean कि this is a official way of calling a page written of something. Okay, a page consisting of the information, this is known as a statement. हाँ. So statement of consent जो प्रोफेशनल और लॉ लैंग्वेज में बोलेंगे ना उसे स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है. समथिंग विच इज सम ऑफ द फॉर्म ऑफ द लीगली, इन अ वे ऑफ द लीगल. ओके, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि लीगली है, ठीक है, तो उसे हम स्टेटमेंट ऑफ द कंसेंट स्टेटमेंट बोलेंगे. अभी जो स्टेटमेंट ऑफ द कंसेंट का मतलब क्या है कि वी हैव गिवन द कंसेंट, हाँ, कंसेंट दे दिए टू अलाउ यू डू समथिंग और व्हाट those things. So the company's confirmation that the director or secretary has given their consent to dispose their duty. Dispose to duty means to start their duty, to start or to work for the company. Okay. तो क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको एक स्टेटमेंट ऑफ कंसर्न देना पड़ता है, किसको, कंपनी के साथ एक रजिस्ट्रेशन को, दैट वी आर ओके टू स्टार्ट आवर ड्यूटीज. ओके. Okay, sir. और द कंपनी की तरफ से भी कंफर्मेशन आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट विल बी द कंपनी हु विल डिसाइड, और फाइनल ऑफ द प्रोसेस की हम ही है जो डिसाइड कर रहे हैं, हम ही है दैट वी आर सेइंग कि यही चीज है और वी आर अलाउइंग इट टू डू. ओके, व्हाट वी आर अलाउइंग टू डू, वी आर अलाउइंग इट, वी आर अलाउइंग देम टू डू, द कंपनी इज अलाउइंग देम टू वर्क. ओके.
Statement of compliance. What does it mean? The statement that the company has complied with the Companies Act. Huh? When I'm doing statement, what I mean, this is a legal paper consisting of the documentation or something like that. Then the registration fees should need to be paid. Okay. After receiving this documentation, the registrar is basically the registrar of companies. Okay, who basically monitor all those companies, inspect them, and ensure that Compliance Act requirement are fulfilled. If they are appropriate, issue certification of the incorporation. The company exists from the date on the certification of the incorporation. But remember, public companies would have the trading certificate because that is a more important thing for them. Huh? So this is something which is left from our side till here. Okay, 2, 3, 4 pages that can be done till the time you want yourself a free. Okay, done. Yes. Trading certificate. What does it mean? Trading certificate. Public companies only. A PLC cannot commence trading until the registrar has issued a trading certificate. In order to operate a trading certificate, an application must be made to the registrar. ऐसा हो सकता है कि इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट के लिए क्या देना पड़े? यू मस्ट हैव टू पे और यू मस्ट हैव टू गिव एन एप्लीकेशन. ठीक है. ओके. आई एम क्लियर ऑन दैट. Yes, sir. The nominal value of the allotted share capital should be, what is this sign of? Equal to or greater than. Hmm. Greater than देखिए 50,000, and at least a quarter of the nominal value and all of the premiums would have been paid. तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि नॉमिनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए और एटलीस्ट उनमें से 1/4 अपना पेड हो जाना चाहिए. ठीक है. हाँ ना. एंड सारा का सारा प्रीमियम आना चाहिए. ठीक है. नॉमिनल वैल्यू मान के चलो, आपने नॉमिनल वैल्यू जो आप कंपनी स्टार्ट कर रहे थे तो आपने नॉमिनल वैल्यू ये रखी और आप शेयर इशू कर रहे हो 2 में, तो 1 इसमें क्या होगा? नॉमिनल वैल्यू होगी, 1 एक इसका प्रीमियम होगा. ठीक है. डन. द अमाउंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं ना कंपनी को फॉर्म करने के लिए, दीज आर द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड हु हैज बीन पेड और इज टू पेड देम. ठीक है. दिस विल बी देयर इन द ट्रेडिंग सर्टिफिकेट. An application In the application you will be making this clear. Any benefit given or to be given to the promoter. अगर कोई benefit आपने दिया है और देना है किसी promoter को तो आप वो भी बताएंगे. ठीक है. If the public company start before receiving the trading certificate, तो क्या क्या होगा? Company officer at fault will be fined. Any contract will still be binding. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बनाया तो कॉन्ट्रैक्ट तो बाइंडिंग रहेगा, पर जो ऑफिसर्स होंगे, कंपनी होगी, वो फाइंड हो जाएगी. ठीक है. इफ द कंपनी फेल टू कैरी आउट दिस ऑब्लिगेशन विद इन 21 days ऑफ बीइंग आस्क्ड टू डू सो. अगर मान के चलो कंपनी और ऑफिसर्स को बोला गया कि आपको यू हैव टू पे द फाइन, तो विद इन 21 days यू हैव टू पे द फाइन. If you're not going to pay the fine, in that case, what is going to happen? The director will be held jointly and severally liable for the obligation. Okay, after 21 days. Okay, it act it can act as a basis for shutting down if the obligation not meet. अगर आपका ट्रेडिंग सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ और आपने ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी, एज नॉट गेटिंग अ सर्टिफिकेट, ट्रेडिंग सर्टिफिकेट और नॉट गेटिंग, या तो आप सर्टिफिकेट ट्रेडिंग सर्टिफिकेट ले लो. अगर आप ट्रेडिंग सर्टिफिकेट नहीं ले रहे तो आप फाइन है वो दे दो. और इट कुड पॉसिबल दैट it could lead to the certain note. It could possible that the company can be come to the end just because of that, because of the obligation has not meet और आपने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से पहले कंपनी को स्टार्ट कर दिया, तो कंपनी के ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए. पर याद रखना कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टिल बाइंडिंग रहेंगे. ठीक है. डन. yes, आई sir. एम क्लियर. अभी रूल्स फॉर द नेमिंग. अगर आपको कंपनी को नेम करना है तो व्हाट आर द रूल्स यू कैन यूज? सो इट मस्ट हैव अ लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी एट द एंड हैज एप्लीकेबल. ठीक है. It must have a limited or public limited company at the end has applicable. It cannot be similar. It cannot be similar to the existing name in the index of the name. ठीक है. अगर कंपनी कोई कंपनी का प्रीवियस मतलब मान के चलो देयर मैनी कंपनीज वर देयर इन एग्जिस्टेंस, तो यू कैन नॉट टेक द सेम नेम ऑफ योर कंपनी हु इज देयर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. ओके. Should not contain offensive and illegal word. Okay. It must have approval. It must have an approval of the secretary of the state to use certain word. अगर आप कंपनी में इंग्लैंड स्टार्टर्ड रॉयल नेशनल यूनिवर्सिटी इंश्योरेंस अगर आप ये चीज कर रहे हो तो आपके पास इनके पास एक अप्रूवल होना चाहिए. ठीक है. यू मस्ट हैव एन अप्रूवल फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. ओके. दीज आर बेसिकली मोर ऑफ द यूके थिंग, यूके स्पेसिफिक थिंग. और एनी नेम सजेशन विद द गवर्नमेंट, एनी लोकल अथॉरिटी, इन दैट केस यू मस्ट हैव टू टेक द अप्रूवल. यू मस्ट. याद रखना मस्ट कब आ रहा है. ठीक है ना. And it must avoid the thought of passing off. It arises where one
सो कब पासिंग ऑफ कब अराइज होगा? तो टॉट इज बेसिकली यू आर नॉट फॉलोइंग, टॉट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ लॉ जहां पे आप कोई चीज फॉलो नहीं कर रहे हो, यू आर इन अ ब्रीच ऑफ समथिंग, ओके? ठीक है। सो इट मस्ट अवॉइड द टॉट ऑफ पासिंग ऑफ, जो पासिंग ऑफ है ना उसका टॉट को आप अवॉइड करना है। बट आपको ये देखना है कि व्हाट इज पासिंग ऑफ और पासिंग ऑफ क्या होता है और कब अराइज होता है। सो वेयर वन कंपनी वन बिजनेस यूज अ नेम विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस, इन दैट केस यू आर यूजिंग द पासिंग ऑफ, ठीक है? इट मिसलीड द पर्सन इनटू बिलीविंग दैट they are of the same business, and it caused the actual damage to the business or will probably do so. Done? Hello, are we clear on this? Yes. A company can voluntarily The company can voluntarily change its name by passing a special resolution under this by any other mean provided for in this article. ठीक है? What the company can do? A company can voluntarily change its name by passing a special resolution under by any other mean provided for any in the article. The Secretary of the State may ask a company to change its name. Secretary of State क्या कर सकता है? Ask कर सकता है, may, must नहीं है, ठीक है? Ask a company to change its name in the following cases and within the following time. ये टाइम दे रखा है और इन रीजन के कारण सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो पूछ सकता है, ठीक है? तो क्या क्या है आप एक बार पढ़ोगे? हेलो Samvit, would you please go with these reasons with the time period? Yes. The name is same or too similar to an existing registered name. That is 12 months. Within 12 months, he has to change the name. Whilst applying for the registration, misleading information or undertakings were submitted within 5 years. The name gives such a misleading idea of its operations that it could cause public harm. There's no time limit. So the very first one is start that you have been very correct, but I needed an explanation. No worry what we will be doing in the class. The name is same or too similar. अगर जो existing business है, if your name is the same or exactly the same something or similar, in that case you might be asked to change your name, and the time period that will be given is 12 months. Okay. Willis applying for the registration, जब आप apply कर रहे हो registration के लिए, misleading information or undertaking were submitted. In that case, you have 5 years to change your name. Okay. The name given such as misleading idea of its operation that it could cause the public harm. In that case, you do not have any time limit, but you have to change the name. ठीक है? ठीक है? Yes, sir. अगर आपका हाँ, just give it a simple reading and then you will be done. If a company want to complain about the name of another company being too similar to its own, अगर मान के चलो मैंने company खोली है, and if someone is opening the same company through the same name, and I think that this could cause a harm to me, in that case, if I want to complain, in that case, it may raise the objection with the company name adjudicator. Okay, ठीक है? Now what does adjudicator over here? I need to check. Okay, allow me a minute. Ultimately, the meaning of the adjudicator would be a different one here, so I'm just checking the same. Hmm. So basically, here this does mean that this will be the body, okay, who will try to resolve the issues of similar name, or whenever you will object a issue that the company is trying to open a company with the name that I do have for my company. In that case, the company or the body will be there who will known as in the company name adjudicator, and that will be the body who will resolve all of the issues or will take the matter as in concern matter for themselves. Okay.
सो आप अगर जो कंप्लेन रेज करोगे उससे कौन कंपनी रिजॉल्व करेगी आपका इशू, सो इट विल बी द कंपनी नेम एग्जीक्यूटिव. ओके, वुड यू प्लीज आंसर दिस Okay, क्वेश्चन sir. टू मी? Read it and answer You this want, question to me. The fifth you want one. me to read it? Yes. Howard Roark owns a famous construction company called Dominic Construction. BU, then P. Dot Keating starts a similar company called Dominic in order to attract customers using Dominic's goodwill. How long will the Secretary of State give Keating to change the name? 5 years. Five What years it is saying? to attract Hello, the what? customers that it is similar name. 2 months was not there, I guess. Or there. No, 2 months is not there. Howard Rock owns a famous construction company called Dominance Construction. View then PK. Catling started a similar company called Dominic in order to attract customer using the Dominic goodwill. So this is a time period for I guess 12 months, right? ये वाला. Oh, okay, sir. Something you need to remember, brother. Okay, that can only help Okay, here. sir. Article of association. They act like internal constitution of the company. ठीक है, एक तो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंटेशन अलॉन्ग विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग वी विल जस्ट लुक अराउंड व्हाट इज एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट? So when I do say article of association, what does it mean? That they act like the internal constitution for a company. दे हैव नो मैंडेट स्ट्रक्चर और कंटेंट. इनका कोई मैंडेट स्ट्रक्चर कंटेंट नहीं होता. व्हाट डज मीन? इनका कोई फ्रेमवर्क नहीं होता, बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का होता है. ठीक है, ये कंपनी के इंटरनल हेल्प के लिए बनाए जाते हैं. दे बेसिकली दे बेसिकली जनरली सेट द गाइडलाइन फॉर गवर्निंग द कंपनी. कंपनी कैसे चलेगी, किस कौन सी पावर किसके पास रहेगी, ना हु विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल, हु विल बी कॉल्ड एज एन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंस, who would be called as a person with a significant control, considering all of these things. And those regulate relationship of the company within the shareholder. ठीक है, that will be for the management, talking about कि management and shareholder का क्या relationship है, and what will be the individual in the management, like company के director की जरूरत है, CEO की जरूरत है, management director, and who they are going to report. If we talk about the structure, the framework, the duties, the corporate governance can be called, yes, corporate governance can be part of the article of association over here. Okay, जैसे कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी अल्टरेड, बट अल्टरेशन टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी पॉसिबल. एंड जनरल रूल क्या है कि दे कैन बी अलर्टेड बाय द अप्रूवल ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन. सो होप यू रिमेंबर, कल हमने बात करी थी कि कुछ थ्री टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं: रिटन रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. Written resolution means you're writing it something, and special resolution means you're going to, if in order to pass a resolution by special resolution, in that case you must have a 75% or majority voting in the favor of yours, right? Then copies of amendment article of association must be submitted to register within the 15 days. Now the date which is days which is coming comes as an important thing to remember. Okay, they might ask you like, in order to change or alert some of the article of association, in that case what is the general rule say? In that case you will be saying that you need a 75% majority, and that need to be done within the 15 days. Notice need to be, copies of amendment should be sent to the register within the 15 days. Is that okay? Amended AOA means the changed one. Amended means Okay. the changed. Okay, Okay. these are the definitions or the keyword that are going to be used in the in the context of the law, right? What are the exemptions there? Entrenchment. Some article may be entrenched. What does it mean? कि कुछ के ऊपर कुछ प्रोविजन ऐसे भी होंगे ना जिनके ऊपर they cannot be changed by ordinary, है ना? Yes, तो sir. कुछ प्रोविजन ऐसे होंगे जहां पे आपको 100% वोट चाहिएगा, विद एनीथिंग लेस देन विल नॉट वर्क, है ना? And 100% voting, it does mean unanimous vote, unanimous consent. Okay, that all or most or ultimately 90-95% or all the individual are saying yes to the same. Okay, अगर वो नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा. It cannot be possible to alter the alteration of the article. ठीक है,
Hello, is it okay? So, in the general rule, it was written they can be altered in the approval of special resolution, that is Your voice is 75% coming majority. slow. Would it be okay? I think I need to just check, but from my side. Yes, please. Could you please come again? In the general rule, it was saying they can be altered by approval of special resolution, that is Hmm. 75% majority. Hmm. And over here, it is saying 100%. Hmm. The reason behind that कि कुछ कुछ ऐसे आर्टिकल के एसोसिएशन और क्लॉज होते हैं that cannot be changed with even 75%, right? So by the time when you are understanding कि there is a thing which is there has an exemptions. What is an exemption or exceptions क्या है? What do you mean by the exemption exceptions? It does mean that these are some other scenarios where it could not possible because ultimately the heading that we are studying is alteration. So general rule ये पढ़ेंगे कि alteration हो सकते हैं, बट अल्ट्रेशन कब नहीं हो सकते? दिस विल लीड टू द एक्सेप्शंस, राइट? एंड एक्सेप्शन में जो हमारा फर्स्ट केस है दैट टॉक्स अबाउट एंड एंट्रेंचमेंट, एक ऐसे कुछ प्रोविजन जिन पे कि 75% वो भी लेस होगा. व्हाट यू नीड इज एन यूनानिमस वोट. ऑल ऑफ द इंडिविजुअल आर देयर एंड दे आर ओके फॉर द अल्ट्रेशन. ओके, इज दैट ओके? Yes, sir. हाँ. Entrenchment means some article may be entrenched. Some article means within the article of association, within it, and a special procedure like unanimous vote or consent might be needed to alert them. This is what they write the Companies Act 2016. This is how they write, huh? ठीक है? Is that okay? The Companies Act Yes, sir. 2016 prevent a member from being bound by any changes made to the AOA after his joining. That may increase his liability or require him to contribute more to the company, right? Any changes to the article must be bona fide in the best interest. What does it mean? Bona fide means कि overall, whatever the changes you are bringing should be in the best interest of the company. Okay, so whatever the alteration you will be doing, it should be the best interest of the company. Okay, ठीक है? Is that okay? Yes, sir. Are we done on this? Yes. Done, done, done. Okay, now we'll move ahead and just look what are the other things there. The court will not intervene unless no reasonable person would consider the change to be bona fide. Okay? The court will not intervene unless no reasonable person could consider the change to be bona fide. Okay? So I think what you have to understand from this sentence that if you're going to make a change which is not bona fide or which is not of the best interest, in that case the court will come and play and take the interference. Okay? Otherwise the court will not be there. If the change is bona fide, it is immaterial that happens to inflict the hardship or has retrospectively operation. What does it mean? Or it is not possible because in law, whatever we are studying, we can whatever the law that we are going to make, we cannot go in the past and change the things accordingly. Retrospectively affect क्या होता है कि आप पीछे जा रहे हो अपनी लाइफ में, वट एवर यू हैपनिंग टुडे, कोई भी लॉ आप लेके आ रहे हो, कोई भी रूल लेके आ रहे हो, उससे आप पीछे जा रहे हो और आप चाहते हो कि फ्रॉम द स्टार्टिंग से वही रूल एप्लीकेबल हो, राइट? बट दिस कुड नॉट बी पॉसिबल इन रियल लाइफ और व्हेन वी आर टॉकिंग और द सब्जेक्ट मैटर इज अ लॉ. ठीक है, तो दिस इज समथिंग टू टेक केयर अबाउट. ओके, So can हेलो, you इज इट ओके? explain the point again? I didn't understand. हाँ, हाँ, हाँ. देखो, दे आर द टू थिंग्स, रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड देन यू हैव प्रोस्पेक्टिवली. इज इट ओके? Yes. Prospectively does mean that whatever the rule, whatever the change you are bringing will apply from now and onward. Okay, ठीक है? This is what prospectively Okay, mean. sir. Retrospectively means you will change things keeping in mind or will try to make the impact of it like that it was there from the starting. So respectively does mean when you're doing the financial statement, so whatever the changes you would be making, you will be trying to change it accordingly that the impact would be seen as in the one that is there from the starting of the change, right? अपन जो रिटेन अर्निंग में चेंज करते हैं ना, वॉट एवर द वी डू इन रिटेन अर्निंग, मतलब मान के चलो प्रीवियस ईयर में फ्रॉड आ गया, वो हमें पता अब पता चला है, बट दैट नीड टू बी एडजस्टेड, तो अपन जाके प्रीवियस ईयर की रिटेन अर्निंग को चेंज कर देते हैं, है ना?
This is why we do, just to Yes. incorporate the retrospectively effect. ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट का मतलब है कि हम ऐसे कुछ करें कि जो हमने रूल बनाया ना, वो ऐसा रूल लगे, इसकी एप्लीकेशन ऐसी लगे कि हम इसे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से फॉलो कर रहे हैं। बट दिस कुड नॉट बी पॉसिबल, राइट? ऐसा नहीं है ना कि हम Yes. अपनी लाइफ में पीछे जा सकते हैं और इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं ना, इट कुड नॉट पॉसिबल। सो ऑल ऑफ द मेजर थिंग्स विल टेक प्लेस एज इन प्रोस्पेक्टिवली। द चेंज विल बी void if actual fraud and operation sticks will. What does it mean? कि अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से you're just trying to make something easy for you to do a fraud, in that case it will not be taking a place, right? An alteration is not invalid mainly because it is called breach of the contract. Wow, this is what you need to take care of that, but does not excuse breach. So one thing to take care of that, an alteration is not invalid. What do you mean by the invalid? Means something which is valid. Not valid means valid. Okay. Can you able to guess, understand what I mean to convey over here? Yes, sir. देखो what they have done over here, कितना मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा है। अभी इनवैलिड का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट वैलिड, ओके, एंड समथिंग कम्स एज एन वैलिड, ओके। फिर ये लिखते हैं नॉन वैलिड, नॉन, नॉट इनवैलिड। नॉट इनवैलिड का मतलब है समथिंग विच इज नॉट इनवैलिड, इट डज मीन इट इज वैलिड, ओके। सो एन अल्ट्रेशन विल Yes, sir. वैलिड Understood. बिकॉज, सो अल्ट्रेशन आपका इनवैलिड नहीं बन जाएगा अगर वो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है। बट इट इज टू इंश्योर दैट इट डज नॉट डू एक्सक्यूज अ ब्रीच, वट एवर द कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। अब ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? वो है ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे ये कि वट एवर द ब्रीच इफ देयर वुड बी एनी बिटवीन द कंपनी एंड देयर थर्ड पार्टी, ओके। आई एम क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. Now we will learn about what is a model article, okay? For companies incorporated under the Companies Act 2006, this is the same thing we are learning about the model article, MOA, yeah? Memorandum of Model Article or something like in Model Article. We'll clear on this. For companies incorporated under the Companies Act, Model Article are prescribed by Secretary of the State. Prescribed means they have been very specifically stated. These model article will be applied when the company is formed without registering article or article register do not exclude or modify the model. So basically for an example, अभी जो article of association हमने पढ़ा है ना, these are the documentation which is made by the company, okay? ठीक है। हेलो। Yes. देखो, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल जो होगा वो कंपनी बनाएगी, दिस इज द मेन थिंग दैट द कंपनी मेक, ठीक है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो वन मेन थिंग, बट कभी कभी क्या होता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी नहीं बनाती है, और कंपनी नहीं बनाएंगी तो क्या होगा, जो मॉडल आर्टिकल है ना, हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए मॉडल आर्टिकल है, पर मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के लिए नहीं है, ठीक है। ठीक है। हेलो। अगर मान के चलो Yes, sir. कंपनी ने मॉडल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल नहीं बनाया, तो कंपनी बनेगी नहीं। अगर कंपनी में मॉडल मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनाया है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया, तो कंपनी बन जाएगी। अगर कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनाया, एसोसिएशन बनाया है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया, इन दैट केस जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो मॉडल है ना, दैट दिस वन वी विल यूज दिस, ओके। ओके, इज इट ओके? आई एम क्लियर ऑन दिस? हेलो, आई एम क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. For companies incorporated under the Companies Act 2006, model article are prescribed by the Secretary of the Board. These model article will be applied when a company is formed
without registering article or article register do not exclude or modify the article of association। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है, उसमें बोलती है कि हम मॉडल आर्टिकल को यूज करेंगे या फिर मॉडल आर्टिकल को यूज करेंगे, उसमें कुछ हमने चेंजेस करते हैं वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, either they can use model article, either they can use model article with some changes, or either they can make their own article of association। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए ऑल दिस थ्री थिंग्स कैन वर्क। ठीक है, बट दिस विल नॉट वर्क फॉर योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, hello, is this done, is that clear? Yes. Hmm. Now, what is the next thing? There are the three model article. The private company limited by shares. There are three model articles. So there are the three model article for the private company limited by shares, private company limited by guarantees, and public companies. ठीक है, a company may adopt the model article completely or partly. It's deemed to have adopted the model article if there has no express or implied provision to exclude them। अगर वो अपने एक्सप्रेसली एक्सक्लूड नहीं करे और अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं डाला, तो मॉडल आर्टिकल है ना वो हमारे इम्प्लाइडली खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, इट इज डीम्ड, वो अपने आप ही अडॉप्ट हो जाएंगे। ठीक है, could draft its own unique article। ठीक है, something that we have discussed। हाँ, is it okay? Are we clear on Yes. this? Legal effect of the company's constitutional documentations. S33, that is in section 33 of Companies Act 2006, state that the provision of the company constitution bind the company and its members to the same extent as if they were covenant on the part of the companies and each of the member to observe those provisions, right? This means that the article form a contract between the company and its member and the member between themselves, even if they do not sign them, okay? Section 33, Companies Act 2006 state that the provision of the company constitutional bind the company and its member to the same extent as if there were covenant on the part of the companies and or each a member to observe those provisions, right? This means that the article forms a contract between the company and its member and the members between themselves if they do not sign them, right? The article are in all respect enforceable by the company against its members। So whatever the company जो भी article वो लेके आ रही है ना, that is enforceable। ठीक है, against their members। The article are enforceable by members against the company, makes members against the company। So कहने का मतलब है जो मॉडल है ना, मॉडल आर्टिकल और whatever the article, those are getting bind the member and the company। ठीक है, is it okay? Yes. The article also operate as a contract between the individual member and the capacity as a member। ठीक है, so this is something you need to learn। A caution might be there on this, okay? So we are less than a 1 minute and then we'll start this topic again, or we'll move ahead. If there would be any doubt, you can ask me, otherwise we'll start the next topic and then complete the one, okay? Okay. Chalo।